एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी वायरस के बारे में, एफएमडी डिजीज के बारे में। एफएमडी डिजीज ऑल्सो नोन एज एप्थस फीवर एंड कॉन्टाजियस एप्था। इट इज एन एक्यूट फेब्रल हाईली कॉन्टाजियस डिजीज ऑफ क्लोवेन-फुटेड एनिमल्स। 1897 में फ्रेडरिक लोफलर ने इसको इन्वेंट किया था। What is the characteristic? The characteristic of FMD is vesicular eruption in the epithelium of buccal cavity like tongue, nares and muscle and teats. अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका जो टांग है, टांग के अंदर आप कुछ वेसिकुलर इरप्शन देख सकते हैं इसके टांग के एपिथेलियम में। इन काल्प्स फोकल डिजेनरेशन ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। कभी कभी हम क्लिनिकल केस में ऐसा देखते हैं कि कोई भी कफ अचानक से मर गया। अगर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं पता चलता। इसका हम अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो फोकल डिजेनरेशन कार्डियक या स्केलेटल मसल में कुछ हुई, तब हम इसका कॉज जो है वो एफएमडी वायरस बोल सकते हैं। स्पेशल पार एक्यूट केस में कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है। एपिडेमियोलॉजी first recorded in 1544 in Europe. Disease is endemic in South America and Central Europe, some African countries also. In Asia, disease is widely prevalent. Disease is eradicated from North America, United Kingdom, rest of Europe, Australia and New Zealand. USA free from FMD since 1989. ये जो एफएमडी वायरस है, इसका इटियोलॉजी है पिकोना वायरस ग्रुप, हैविंग साइज 8 to 10 म्यू माइक्रो। ये दिस इज एक्चुअली स्मॉलेस्ट नोन वायरस ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड इट इज फिल्टरेबल वायरस। देयर इज एक्चुअली हियर इज रिटन 5 strain, but actually 7 strains identified till now. O named for Ois Valley in France, A named for Almond in France, and C identified in Germany. This is actually FMD virus. And another the HU1, SET1, SET2 and SET3. Virus is resistant to common disinfectant, sodium hydroxide like sodium hydroxide and 1 to 2% formalin. But 4% sodium carbonate can destroy easily the virus. Glycerin phosphate buffer pH 7.6 is best for the preservation. ट्रांसमिशन, ये वायरस एक्चुअली कैसे ट्रांसमिटेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, इन्फेक्टिव मटेरियल, वाटर, फीडर यूटेंसिल्स, इनहेलेशन, एयरवेज एंड विंड, ऑल सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन लाइक यूरिन, मिल्क, फेसेस एंड मीन्स ऑल द फोमाइट्स, मीट एंड बोन विजिटर्स एंड वाइल्ड रूमिनेंट रिमेन एज कैरियर्स। अब आते हैं इसका पैथोजेनेसिस, कैसे ये बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर द मीन्स ट्रांसमिशन, आफ्टर इन्फेक्शन वायरस एंटर्स इन द सॉफ्ट पैलेट. It affects mucous membranes of oral cavity, invade the stratified epithelium of tongue and produce vesicles. Then the virus from the tongues, actually virus enters the blood circulation, means it directly attack our animal systematic circulation and produce viremia. Actually viremia means the, always remember, means the presence of virus is the actually in the blood is called viremia. Thereafter, typical vesicles are produced on the mouth, dental pad, feet and udder within 3 to 8 days. यहाँ पे देखिए, अगर 24 आवर्स में क्या होता है, जो वेसिकल वो टंग में फॉर्मेशन होता है और 3 से 8 दिन तक वो वेसिकल आपका माउथ, डेंटल पैड, फीट एंड आर्डर में फॉर्म हो जाता है। और इस वायरस की प्रेजेंस की वजह से जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है वायरेमिया की वजह से, एंड वो एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं टिश्यू को। स्लैपिंग ऑफ हूफ, आर्डर लेसन विथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी जो बैक्टीरिया होता है वो आर्डर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, और जो कि एक्चुअल में मास्टाइटिस का बहुत बड़ा एक वजह होती है। काल्फ हार्ट, डिजेनेटिव ऑफ मायोकार्डियल सेल फाइबर्स, इट गिव्स स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, टाइगर हार्ट। आई ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड दिस इन प्रीवियसली, जो कफ का हार्ट होता है वहाँ पे जो मायोकार्डियम होता है उसका डिजेनरेशन हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे टाइगर हार्ट अपीयरेंस वो पोस्टमार्टम को दिखाई देता है। क्लिनिकल सिम्टम्स, डिजीज यूजुअली नॉन फाटल, जो मोर्बिडिटी वो पूरा 100% है,
और जो मोर्टालिटी होते हैं वो स्पेशली इंडिजिनस केटल की मोर्टालिटी इज लेस इन इंडिजिनस केटल के बहुत कम होता है मोर्टालिटी, बट मोर्टालिटी इज मोर इन प्योर एंड क्रॉसब्रीड केटल एंड द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 8 day फॉर द एफएमडी। टेम्परेचर एफएमडी में थोड़ा बढ़ जाता है, 104 से 106 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जर्नलिस्ट मलेशिया डिप्रेशन एंड डिजेक्शन एंड एपैथी दिखा जाता है। वेसिकल्स मस्ट बी वी नो इसको भी सीन। वेसिकल्स अपीयर इन इंटरडिजिटल स्पेस, अडर ड्रूलिंग ऑफ फोमी एंड रोपी सलाइवेशन एंड प्रोट्रूशन ऑफ द टंग, मीन्स जो टंग होता है वो मुंह से बाहर निकल आता है। यू कैन सी हेयर ऑल्सो द टंग इज protruded and there is vesicle formation and also ulceration also there. The clinical symptoms or drooling of saliva and the protrusion of the tongue. और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स जो एफएमडी में दिखाई देता है, लेमनेस, वेसिकल्स रप्चर इन माउथ एंड अल्सर्स आर फॉर्म, इरोडेड सरफेस प्रोड्यूस मीन्स फ्रीक्वेंट स्मैकिंग ऑफ लिप्स, फ्रीक्वेंट ये जो फोटो दिख रहा है इसमें ये जो लेफ्ट साइड के स्मैकिंग ऑफ लिप्स आप थोड़ा सा यहाँ पे दिख सकते हैं। और एनिमल रिफ्यूजेस टू ईट ड्यू टू पेन इन ओरल एंड फाइनली इरोडेड सरफेस टेकन ओवर बाय ग्रे फाइब्रिनस कवरिंग, एनिमल स्टार्ट ईटिंग। इंटरडिजिटल स्पेस में लेसन होता है जो जिसकी वजह से वो लेमनेस शो करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में लेसन डेवलप ऑन हूप एंड स्किन, इंटरडिजिटल स्पेस, वेसिकल फॉर्म एंड रप्चर प्रोड्यूस सीवियर पेन एंड लेमनेस। ये हूफ में भी वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे लेमनेस दिखाई देता है, वो एक्चुअल सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है। इन सीवियर केसेस हूप गेट डिटच, सीवियर हूप डिटच भी हो जाते हैं। वेसिकल्स अपीयर्स ऑन द अडर, मैं पहले भी बोला, दो मास्टाइटिस एंड प्रेग्नेंट एनिमल मे अबॉर्ट। सो एक्चुअली ये बिकॉज मास्टाइटिस एंड abortion is economically very harmful to the farmer, that's why the FMD disease is very dangerous for the farmers। ये देखिए मास्टाइटिस आर्डर में वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है जिस वजह से मास्टाइटिस हो सकता है। यंग एनिमल डाई विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स, क्योंकि जो काफ डाई होता है ड्यू टू मायोकार्डाइटिस एंड मायोकार्डियल डिजेनरेशन की वजह से, तो यंग एनिमल तब कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करते। एक इसका एक पोस्टमार्टम करने से आपको टाइगर हार्ट जैसा साइंस देखने मिलेगा। पोस्टमार्टम लेसन, बेसिकल अल्सरेशन ऑन ओरल म्यूकोसा, हार्ट मसल शो डिजेनरेटिव चेंजेस एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑन ग्रे और येलो फोकी एंड स्ट्रिप्स इन द मायोकार्डियम, मीन्स टाइगर हार्ट। सो टाइगर हार्ट किस में दिखाया जाता है, किस डिजीज की पोस्टमार्टम लेसन है, ये एफएमडी का पोस्टमार्टम लेसन है। पोस्ट एफएमडी कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट एफएमडी कॉम्प्लिकेशन आपको पेंटिंग दिखाई देगा, ये एक सिक्वल डिजीज है आफ्टर द एफएमडी। देयर इज एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, थार्मोरेगुलेशन, एनीमिया, मास्टाइटिस, मोर चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन काउस। तो अब डायग्नोस हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस, लेबोरेटरी टेस्ट एंड एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट, इंजेक्शन इन द फूड पैड इन द गुनिया पिग, ये सब टेस्ट आप कर सकते हो। complement fixation test, CFT, is this test actually the laboratory confirmation of the virus. In this test antibodies against all 7 types are used. Diagnosis, neutralization test, suckling mice tissue culture is used as a test medium। AGPT भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैट टिश्यू कल्चर ELISA। ट्रीटमेंट, एक्चुअली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन and antiseptic mouthwash with potassium permanganate and sodium carbonate, boric acid and glycerin may be applied on mouth lesion for the actual vesicle. Control and prevention, actually prevention is better than cure, so restriction of the animal movement, no purchase of animal from infected area, unvaccinated animals not allowed for cattle fair, strict vaccination and isolation of animal, don't allow to graze on infected pasture and don't allow to drink infected water। Control and prevention में 1% potassium permanganate solution used for the mouthwash 3 to 4 times a day। For feet, 2% copper sulfate solution we can apply, and antiseptic lotion, fly repellent used to avoid the maggot formation in the wound। The mainly we by regular vaccination is very essential for the prevent
the FMD. So there is a mainly made by BAFE, hoichist and Indian immunologist, and the BAFE FMD vaccine is mainly polyvalent inactivated vaccine containing OAC and ACA1 and monovalent subtype A22 strain. जिसका डोज रेट कैटल के लिए है 10 ml subcutaneous dose for the calf, sheep and goat 5 ml subcutaneous, and given for the booster every 6 months interval you can give. And the Clovas FMD vaccine is manufactured by which is India Private Limited, OSC AC1. Dose for the same 10 ml and 5 ml, same as the like BF FMD vaccine. Now is our Raksha FMD vaccine. This is actually prepared by Indian immunologist. Contains OSC AC1 and AC2. Dose for the cattle and buffalo actually 3 ml subcutaneous, and sheep and goat 1 ml subcutaneous, and booster is after every 6 months interval. And Roxovag also is there. This is by also prepared by Indian immunologist. Cattle buffalo 2 ml intermuscular. Others are actually subcutaneous, but Roxovag is intermuscular. Always remember, sheep goat intermuscular 6 months interval. Okay, thank you so much.